Hello and welcome to Vigyan Bharat. Today I'm going to discuss a problem from IIT JAM 2022 examination in mathematics. The subject code is MA, problem number 5. So we are given a power series. What we are given a power series of this form, and we have to find the radius of convergence of the given power series. So हमें जो सीरीज गिवन है उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करना है. इसमें बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको. So we are given a power series of this form. This form is very important to us. The general form of this power series is like this, which I have written over here. Fine. Summation n running from 1 to infinity an x to the power n. अगर इसको हम एक्सपैंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें. a1x a2x square a3x3 and so on. This is an infinite sum, तो चलता जाएगा. Now the given series is this. We are given this series. Now what we want to express our series in this form, this particular form. I'm interested to express my series in this form. So which can be expressed as summation n running from 1 to infinity. This is same as it is. This is the coefficients, the constants of the x to the power 5 to the power n. So I'm now rewriting this as this. x की पावर 5n को हम कैसे लिख सकते हैं? x raised to the power 5 whole to the power n, which is same as an to the power yn, because what I want my series to express in the form of this an xn, something like this, where n again varies from 1 to infinity, because x is already there, the variable x is already there. So now I am replacing my x with respect to the variable, just replacing the variable x in terms of the variable y. So our given series, in the given series we have an is n to the power cube divided by 4 raised to the power n, and y is same as x to the power 5. Now to move ahead, in order to calculate the radius of convergence, we have to use a result which is a very simple result to calculate the radius of convergence of our series. That is, we have to use the ratio test or the root test depending on the expression of an. हमारा an कैसा है उसके हिसाब से हम रेशियो या फिर रूट टेस्ट को यूज करने वाले हैं टू फाइंड द लार्जेस्ट ओपन इंटरवल वेयर द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली. तो जो हमारे लार्जेस्ट इंटरवल होगा, यहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगा? आपका रेडियस होगा. ये सीरीज हमारी x में है और a के अबाउट सेंटर्ड है, किसी पॉइंट के अबाउट सेंटर्ड है जो आपकी पावर सीरीज है. बट जो हमारा गिवन सीरीज है उस केस में इसको मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इसको मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ. an y minus 0 to the power n. That is, it's centered at the origin. The series is centered at the origin. This a is 0 in our case. Fine. So now let's first discuss what is the ratio test. So what the ratio test says, given a series of non-negative terms of the form summation an, let me choose now yn because I have rewrite my yn running from 1 to infinity. If now there are three cases. If the limit of n approaches infinity mod an plus 1 divided by an, इस क्वांटिटी को अगर मैं एक रो बोल दूं तो हमारी जो सीरीज है उसमें जो ये क्वांटिटी निकालोगे आप an plus 1 डिवाइड बाई n. an आपको गिवन है तो जहां जहां an का जो फॉर्मूला है उसमें n को n plus 1 से रिप्लेस करके आप n plus 1 कैलकुलेट कर लोगे और एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास. तो उसके बाद ये रो मिल जाएगा. तो अब यहाँ पे केस क्या है कि दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली इफ दिस रो इज लेस देन 1. दिस रो हैज टू बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 फॉर द सीरीज टू कन्वर्ज. If rho is greater than 1, then the series diverges. This is the case when our series converges. This is the case when our series diverges. And if rho is 1, then ratio test fails. Ratio test fails. या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Inconclusive. We cannot conclude anything. Conclusive. Ratio test is inconclusive in that case because the series might converge or might diverge. There are various examples you can choose to verify for this particular case. Now let's go ahead. Since our an was what was our an?
Again, let's see. This is our n to the power 3 upon 4 to the power n. N to the power 3 divided by 4 to the power n. And now my this x to the power 5 I have assumed to be y. Fine. So अब हम कैलकुलेट करेंगे रो को. तो an plus 1 by an. तो n को n पहले an plus 1 डिवाइडेड बाई an निकालना है आपको. an plus 1 क्या होगा, जहां जहां n है उसको n plus 1 से रिप्लेस कर दोगे, ये हो जाएगा. बिकॉज ये an डिवाइड में है तो जब मल्टीप्लाई में होगा तो उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी. तो वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं. ये आ जाएगा यहाँ से. फाइन. Now it's quite easy. You simply have to just take the like terms together. N plus 1 by n whole to the power 3, and this is simply 1 by 4 because 4 to the power n कट जाएगा. तो ये बच जाएगा आपके पास. Now this is your row. Now take the limit. Simply take the limit. Taking. Wait. Yeah. Take the limit as my n tends to infinity. As n tends to infinity. Observe यहाँ पे हमें मॉडुलस लेना था, लेकिन बिकॉज जो आपका जो है आपके पास जो वैल्यूज गिवन है जो इसमें एन की वो ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने मॉडुलस यहाँ पे नहीं लिया है. अगर वो नेगेटिव हो तो आप उसको मॉडुलस ले लेना. तो यहाँ पे जब इसको लिमिट निकालोगे, लिमिट n tends to infinity. नाउ इट्स क्वाइट सिंपल. n plus 1 को आप स्प्लिट कर सकते हो. यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो फिर से, this times 1 by 4 and this is my row. So जब यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से सिंपली आपने इसको क्या किया, स्प्लिट कर दिया इनको दोनों तरफ. तो 1 plus 1 by n. You can take limit inside because this sequence is continuous. As function लिमिट अंदर चली जाएगी, और you simply algebra of limits. This is multiplication 3 times, so algebra of limits 1 by 4 equal to row. यहाँ से जब लिमिट रखोगे तो 1 बन जाएगा यहाँ पे. दिस इज 1 by 4. नाउ यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है. जहां जहां an है हमारा, ये पूरा है यहाँ पे तो रो के बराबर है, तो केस है हमारे कि. लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे कि वेदर द सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, तो यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है an plus 1 by an and this yn plus 1 by yn, this whole quantity has to be strictly less than 1 for the series to converge. तो अब मैं इसका यहाँ पे यूज करने वाला हूँ. an plus 1 मैंने an को निकाल लिया ऑलरेडी, yn plus 1 by yn. तो यहाँ पे y बन जाता है क्योंकि मेरे को क्या है, सिंपली यहाँ पे y चाहिए ना. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, an plus 1 by an टाइम्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ से y mod y strictly less than 1. सो एंड y टू द पावर हमारे केस में क्या है, यहाँ पे y इज सेम एज x टू द पावर 5. सो मैं उसको डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x टू द पावर 5 का मॉड स्ट्रिक्टली लेस टू बी रो एंड इट हैज टू बी लेस देन 1 फॉर और सीरीज टू कन्वर्ज. तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पावर 5 का मॉड स्ट्रिक्टली लेस देन 4. और यहाँ पे बिकॉज दिस, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो आप, अभी this is same as this. Now take 1 by 5 power on both the sides, so mod x will be 4 to the power 1 by 5. और यहाँ पे इसको आप, तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेट जो वैल्यू आई है आपकी, ये आपकी रो हो गई. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ फिर से, x minus 0 strictly less than 4 to the power 1 by 5. तो यहाँ पे जो ये रो के इक्वल आ गई ये क्वांटिटी, तो ये आपका क्या मिल गया आपको, रेडियस, जो आप r बोलते हो. तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, फॉर द गिवन सीरीज टू कन्वर्ज यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द रेशियो टेस्ट. हमारी जब सीरीज है हमें पता है कब कन्वर्ज करती है, जब क्वांटिटी स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो. तो वही हमने किया, सिंपली यहाँ पे हमने r की जो वैल्यू निकाल ली. r क्या आ गया आपका 4 to the power 1 by 5. इसको वैसे लिख सकते हैं. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेडियस फॉर द गिवन सीरीज टू कन्वर्ज. Now try to check the radius of convergence using the nth root test. Nth
रूट टेस्ट उससे भी आप इसको कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल होगा, उससे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने जस्ट इसको रेशियो टेस्ट अप्लाई किया, तो इसको आपने ट्राई करना है और चेक करना है कि आपका रेडियस आ रहा है गिवन पावर सीरीज का। सो आई होप you like the video. If you have any doubts or any queries regarding this problem, you can drop in the comment section. Do join our Telegram group. There we discuss some good problems every day, and we post some good problems from good entrance examinations like IIT JAM there every day. So do join that Telegram group. Find its link in the description of the video. And thank you so much for watching. We'll meet again, similar problem. Thank you so much.